Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we will be discussing the 7th part of the current affairs revision series that we are doing from Monday to Thursday at 6 p.m. And so if I'm audible and visible, please write yes in the comment section so that we can start our session. And this is the 7th part. Those who have not watched the previous part, I would suggest to go on our YouTube channel, subscribe to the channel, go to the playlist and go here. यहाँ पे view full playlist लिखा है. Click on that. You will get all the previous parts as well, and that would be very beneficial for you. ठीक है? Go and watch that. दूसरा है कि if you are interested in buying any crash course, then go to our website careerlauncher.com. Click here. There will be a section of law. Click there, and just fill your phone number, and our counselors will call you, or you can call on this number also. देखो top में right में there are two numbers. One is a WhatsApp number also. Because some students were asking कि सर आप जब बोलते हो कि paid class है पढ़ाया, so which paid class you are talking about, so you can call and get to know more about the courses and all. Okay. Yesterday मैंने homework दिया था National Startup Day, so the answer is 12th January. National Youth Day is 12th January in the memory of Swami Vivekanand ji. National Startup Day 16th January. And India was able to extend the range of BrahMos missile after MTCR missile technology control regime के बाद we were able to actually extend the BrahMos missiles capabilities, ठीक है, beyond a certain point. So इसीलिए MTCR missile technology control regime का part बनने के बाद India actually improved the BrahMos missile. ठीक है, MTCR also we had discussed in yesterday's class as well. तो किन लोगों ने आंसर किया? Let me show. So Pallavi, Anmol, Priyanka, Parmitar, Suhani, Singla, CLAT, Cracker, you all were right. Very good. And Aradhana, Tansi Gupta, Suikrut, Priya, you all were right. And कुछ लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट किया है जम्मू कश्मीर इलेक्शंस पर. अच्छा, मैं देखता हूँ if it is possible I'll make a separate video, otherwise I'll do a in revision class में adjust कर लूँगा कहीं पर if there is something special about it. फ्यूचर समिट्स पर मैं देखता हूँ अगर COP29 वगैरह जैसा आने वाला है, COP29 होने वाला है, then we'll be having G20 summit. So we'll be having a session on the upcoming classes, on the upcoming summits. ठीक है, nothing to worry. Let's begin with today's class. And here's the question. Please read it and then answer me. Yes, good evening guys, good evening everyone. So please read it and answer the question. The Defense Research Development Organization on 1st May announced a successful flight test of X from APJ Abdul Kalam Island. And I still remember I have taught this in my paid sessions in the crash course where I was teaching current affairs and all. तो हमको अभी भी याद है. Yes. Yes, Dharini, Veer Sharma, Rashi, Anshika, Harshita, you all are right. Actually, I was talking about देखो यहाँ से पकड़ना है. It is actually anti-torpedo system. और भी कहीं पे लिखा होगा, मैं देखता हूँ. Is the next generation missile-based torpedo delivery system designed and developed by DRDO to enhance the anti-submarine warfare. है ना? So this is basically talking about smart. Yes. कोई full form बता देगा? I'll be very happy. Smart missile assisted advanced resistor of torpedo something. हाँ. Yes, good. Veer Sharma, Dharani, very good. ठीक है, B is the right answer. You're right. I'll explain about this little bit. Yes, and please, smart करके था. So B is the right answer. It has full form as well. Now, please tell me the next question. The Dr. APJ Abdul Kalam Island, which is mentioned in the previous question, is located in the state of what? The previous question is में मैंने APJ Abdul Kalam Island की बात की, and that is why you should know. And please tell me the old name, if possible, of APJ Abdul Kalam Island. Yes, very good, Rashi, Harshita, Dharani. Yes, Odisha mein, good. Mukti Sharma, very good. Harshita, Mishika, you are right. You will find it in Odisha. Actually, Odisha में बहुत सारे टेस्ट होते हैं. हाँ, इसका old name था Wheeler Island. Yes, Dharani, Mukti Sharma, Veer Sharma, Mishika, you are right. इसका old name था Wheeler Island, and now it is called as APJ Abdul Kalam Island after his death. ठीक है ना? So we have named after him. तो let me show actually क्या ओडिशा में बहुत सारी जगह. So ओडिशा में यहाँ पर आपको मिलेगा
वही एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ये कलाम आइलैंड आई एम राइटिंग इन शॉर्ट। यहीं पर आसपास में समवेयर यू विल फाइंड बालासोर डिस्ट्रिक्ट। आपने नाम सुना है बालासोर डिस्ट्रिक्ट का? यहाँ पे आई थिंक लास्ट ईयर वी हैड सीन एन अनफॉर्चुनेट रेल एक्सीडेंट आल्सो। तो वहां पर आईटीआर है। आईटीआर मतलब व्हाट? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है ना, वहां पे भी डीआरडीओ बहुत सारी चीज टेस्ट करती है, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर, यू शुड नो इट, है ना। डीआरडीओ मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, है ना। एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी, एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी, सबमरीन आप समझते हो जैसे ये शिप है, मान लीजिए पानी पे चल रहा है, ठीक है, नीचे में से सबमरीन चल रही है, तो यहाँ से आप टॉर्पीडो से उड़ा सकते हैं इसको, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये सब मैंने बताया था पेड क्लासेस में, आई स्टिल रिमेंबर। खैर, द नेक्स्ट वन इज दिस क्वेश्चन, प्लीज रीड इट एंड देन आंसर मी, इट इज वेरी मच इन द न्यूज। अच्छा, मैंने एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास लगाई है संडे को 3 PM, एक तो सैटरडे को 3 PM पे क्लास होगी। पीपल वर आस्किंग कि सर गवर्नमेंट स्कीम्स पे क्लास ले लीजिए, प्लीज टेक क्लास ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। एंड संडे को 3 PM पे विल बी हैविंग सेशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, प्लस एआई। यू आर टॉकिंग अबाउट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल। सो इस पर भी काफी डिमांड था, रिक्वेस्ट था, सो आई हैव डिसाइडेड टू टेक क्लास ऑन दैट एज वेल। New method of cyber fraud. Yes, very good. Digital arrest we are talking about. Yes, Veer Sharma, Dharani, Anshika, Safi, Rashi, Mukti, Tridi, all right. It is called as digital arrest. थोड़ा सा मैंने कल भी बताया था. I had discussed in the yesterday's class as well. है ना? So इसमें क्या था, कोई बंदा लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सीबीआई, ईडी का ऑफिसर बन के, पुलिस ऑफिसर बन के फोन करेगा, मतलब फेक ऑफिसर बन के कि if you do not do it, I will arrest if you do not give this much money, etc., etc. So for that, the Union Home Ministry has set up a committee headed by a secretary, Home Ministry's Internal Security. And as far as I searched, देखो जैसे मैंने ये आर्टिकल पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि secretary, it will be monitored by the secretary, Internal Security, Home Ministry. And I could find that perhaps Mr. Praveen Vashist is the person who will be the officer concerned. ठीक है. ओके, जो हमको मिला स्पेशल सेक्रेटरी लिखा ना, होम मिनिस्ट्रीज इंटरनल सिक्योरिटी, सो हियर इज मिस्टर प्रवीण वशिष्ठ, सो यू शुड नो इट। द नेक्स्ट इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आर रिलीज्ड बाय IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, WTO। व्हाट इज द राइट आंसर? ये कई बार न्यूज में रहता है एक्चुअली, सेकंड वाला तो काफी आता है, इवन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आता है अक्सर न्यूज में, सो इफ यू रीड इट। Yes, Rashi Singh, Veer Sharma, Mukti, Dharani, Anshika. You are right. The right answer is International Monetary Fund, IMF. ठीक है। इनकी दो बहुत पॉपुलर रिपोर्ट आती है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। ओके, यस, यू शुड नो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which drone is being talked about? The Hermes 900 drone, also known as this drone, being supplied to Indian Army and Navy by Adani Defense System. Let me see how many of you can answer. मैंने ऑप्शन घुमा के दिया नहीं। I'm giving few more seconds so that I can find more perfect correct answers. Yes, I have got one right answer actually. Safi Namani is right. Drishti 10 इसका नाम भी है, ठीक है। So actually, if you see it, Army to get first Hermes 900 on 18th May to boost surveillance on Pak border. So Hermes 900 also known as Drishti 10 drone, ये वाला है, ठीक है। So manufactured by Adani Defense System. So B is the right answer. Okay, है ना? ऐसे लिया at the same article of Business Standard. The next is here we are talking about Adani Defense had signed a deal. देखो गलती से space चला गया, I'm very sorry for that. ये space को space मत मानना। Adani Defense had signed a deal with the X firm Elbit for the transfer of technology for the drones and stated that it has indigenized 70% of the birds
and will work to increase it further. Birds मतलब यहाँ पे drone की बात हो रही है, वैसे लिखा जाता है. Even jets को भी birds लिख देते हैं. So Adani Defense has done a deal with a firm to come up with this drone. जो ये वाली drone जो अभी drone की बात हो रही थी, Hermes 900 या दृष्टि 10, किन से agreement किया है, कौन से मुल्क से? If you have read today's article, you can answer it. Today's newspaper. अगर आपने आज का भी अखबार पढ़ा होगा ना, वैसे सर्च किएगा thehindu.com, तो भी कुछ न्यूज में था ये वाला टर्म. The right answer, yes, Dharani is right. B is the right answer. Actually, it's an Israeli firm, LB. ठीक है. So Adani Defense had done a signed deal with Israeli firm LB. LB, I don't know the pronunciation. खैर, क्यों न्यूज में था? Because if you read it today, आज ये न्यूज जैसा आपको सर्च करना बस Hermes, एक Hermes 450 भी आता है, एक Hermes 900, ये दोनों जो ओरिजिनली इजराइल का ही ड्रोन है. So I read an article regarding इजराइल हिजबुल्ला कॉन्फ्लिक्ट, उसमें कुछ इस तरह का न्यूज आया था कि रिलेटेड विद दिस. ओके, तो ये इवन उस कॉन्टेक्स्ट में भी न्यूज में था. सो दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग इट. हालांकि इट हैज इंडिजनाइज्ड 70% ऑफ द बर्ड्स. इंडिजनाइज मतलब होता है कि 70% ऑफ द ड्रोन एक्चुअली का जो हिस्सा है वो वी आर इंडिजनाइज मींस मेक इन इंडिया, व्हिच इज मेड बाय अदानी डिफेंस. मतलब जो भी यूज हुआ होगा इनपुट, whatever the input or the material is required for making a drone, 70% are actually made in India. It means 30% we are importing most likely from Israel. Okay, the other countries. So the idea of this Hermes drone has been taken from Israel. Okay. फिर पहले एक और है Heron Mark II birds भी होता है, एक और this is very popular. Heron is also a drone from Israel and all. Okay, the next one is which country would be the first country to lose all its glacier? ये काफी न्यूज में था, को स्टार लगा लीजिएगा. And if you tell me the name of the continent where it lies, I'll be very happy. Lose all its glacier according to the definition, ठीक है ना? Yes, Dharani, Rashi, Safi, Dhriti, Mukti. You are right. The right answer is Venezuela. कहाँ मिलेगी आपको? Which continent? Yes, South America. Good, very good. So basically, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया है. This is South America. And this is Venezuela. ठीक है. So the right answer is B. Okay. So Venezuela capital है Caracas. So lose all its glacier क्या होता है कि एक बार सारा पिघल खत्म हो गया सडनली. एक्चुअली डेफिनेशन के हिसाब से इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के हिसाब से उनका कुछ डेफिनेशन है, इतना मिनिमम होना चाहिए ग्लेशियर डिफाइन करने के लिए. सो वो लिमिट से नीचे आ गया. So according to their definition, since it is not fulfilling the definition, so they consider they have lost all the glaciers. ठीक है, ये कहने का मतलब. ठीक है, I hope you are aware of this concept. ठीक है. Okay. Let's move on to the next one. Which of the following is called as third pole? Actually, previous class से related questions related है. Himalayas, Mount Kilimanjaro, Mount Etna, Mount Chimborazo. Yes, Rashi, Dharani, Muskan, Safi, Lavina, you're right. Third pole क्यों कहते हैं? Reason? देखो, अगर आप नॉर्थ पोल पे हो तो वो क्या मिलेगा? आइसबर्ग्स वगैरह. साउथ पोल पे भी जाओगे अंटार्कटिका में तो वही कुछ मिलेगा. बाकी तीसरी जगह सबसे ज्यादा जो मिलेगा इसी रीजन मिलेगा, हिमालयस में. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज थर्ड पोल. मतलब ये जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में यू विल फाइंड ice layer similar to that, you will find it in Himalayas. So that is why they are calling it as third pole. Yes, similar to other two poles. Go to Dharini. The next is this question. Read it and then answer me. India has surpassed X to become world's largest solar power generator in 2023. इंडिया ने किसको पीछे किया?
और कितने रैंक पर आ गया? Yes, Dharani, Rashi Singh, Rashi Bansali, Safi Namani, all right. Actually, the right answer is B. India has surpassed Japan to become the third largest solar power generator in 2023. अब सोलर की बात हो रही है तो हम आपसे एक दो चीज पूछेंगे. इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है कब फॉर्म हुआ? When it was formed, with whose initiative, at which place, and where is the headquarter, and who is the director general? इसमें से तीसरा वाला है. This was asked in the ILET 2 years back. और अभी रिसेंटली स्पेन जो है 99th मेंबर एक्सीड किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, मतलब बना था, सब न्यूज में था. खैर ये तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल होता उससे नहीं पूछें, बट यू शुड नो इट. बताइए. 2015 इंडिया फ्रांस गुरुग्राम मैथ समथिंग. यस धरणी, आपने सही जवाब दिया. फॉर्म्ड इन 2015 ऑन द साइडलाइन ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इन पेरिस फ्रांस. The headquarter is in Gurugram. Yes, great. Very good, Rashi Singh. Fantastic. And the Director General is Mr. Dr. Ajay Mathur. Yes, Rashi Bansali, you are right. B is the right answer. India became world's third largest solar power generator, overtakes Japan. लास्ट मेंबर स्पेन. आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बिकॉज आई वाज रीडिंग अबाउट स्पेन. हो सकता है उसके बाद भी कुछ ऐड हुआ, सो आई विल चेक एंड देन टेल यू. ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा थोड़ा. ठीक है. एक्चुअली द आइडिया इज टू प्रमोट सोलर एनर्जी एंड ऑल. ये सब मैंने पेड सेशन में पढ़ाया है. ये चारों जब मैंने बताया नहीं पढ़ा है, सब बता चुका हूँ. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीस 4 थिंग्स. सो दैट इज व्हाई आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एवरीवन शुड आंसर. World's first rocket with fully 3D printed engine has been launched by, ये भी बताया, स्टार मार्केट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूछ लेंगे कहीं एलेट में पूछ लेंगे, मैं गेस कर रहा हूं. ये भी बताया. दिस ऑल्सो आई हैड डिस्कस्ड इन पेड सेशंस. Yes, Dharani, Rashi Bansali, Mukti, Safi, Muskan, Priyanka, you're right. Agnikul Cosmos ने बनाया है. Fully 3D printed engine has been developed. So A is the right answer to this question. A is the right answer. Yes. The next is, since we are talking about Agnikul Cosmos, it is an incubated startup based in IIT Delhi, IIT Madras, IIT Bangalore, IIT Guwahati. What is the right answer? Yes, IIT Madras. ये सब क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, Agnikul Cosmos related, so you should know B is the right answer. Yes, good. Muskan, Rashi, Safi, Rashi, Dharini, you are the right. Now let's move on to the next question. Please read it and then answer me. अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड कौन सा है? तो धनुष है. वही सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में मिलेगा, और इसको बनाया है वही अग्निकुल कॉस्मोस ने. तो किसकी बात हो रही है? अग्निबाण. यस, अग्निबाण सॉर्टेड. वेरी गुड राशि सिंह, Safi Nomani, Rashi Bansali, Dharani, you all right. Full name is Agniban Sorted Suborbital Technology Demonstrator. और जिस लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया वो एक प्राइवेट लॉन्च पैड है. हालांकि वो है वही श्रीहरिकोटाई में, बट उसमें सेपरेट अग्निकुल कॉस्मोस वालों ने बनाया है. धनुष नाम है. ठीक है. तीसरी चीज एक और याद रखिएगा, फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन है ये. You should know this. Please remember it. ये इसकी chances है highly likely that they will be giving this exam. This is the next question. Read it and then answer me.
I have not given the option, otherwise it will become easy, but these days they are asking questions from space technology, and that is why I have given this question. नहीं, इनकोस पार कैसे होगा? It is a mission to be launched in 2025. ठीक है, इनकोस पार तो इट इज प्रीकर्सर ऑफ इसरो, ठीक है, तो इनकोस पार नहीं होगा. इसका जो आंसर है वो यहाँ है बस. यस, नासा एंड इसरो इज द कीवर्ड जिससे आप पकड़ सकते थे. निसार नाम, यस, मुक्ति शर्मा एंड सैफी नोमान, यू बोथ आर राइट. नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार. यस, मुक्ति शर्मा, गुड. हाँ, ठीक है. यस, हाँ, सैफी नोमानी, राशि बंसली, ऑल राइट. लवीना, मुस्कान, यू आर राइट. हाँ, ठीक है. सो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है वो 2025 में लॉन्च किया जाएगा. डुअल फ्रीक्वेंसी बैंड रहेगा और डुअल फ्रीक्वेंसी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैंने हाँ, एक एल बैंड रहेगा और एक एस बैंड रहेगा. डुअल फ्रीक्वेंसी लिखा है, तो एक एल बैंड में रहेगा, एक एस बैंड में रहेगा. ये दो अलग फ्रीक्वेंसी होती है. मैं इतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, बट यू शुड नो दैट देयर आर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा, ठीक है. And this will be one of the costliest. It will be used for remote sensing to observe and understand the process of the Earth. Its face lifting instrument will study Antarctic cryosphere also. Cryosphere मतलब क्या होता है? जहाँ पर बर्फ हो, glacier. Cryo मतलब बहुत ठंड. So इसका एक और जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी अपग्रेडेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो अंटार्कटिका पर भी रिसर्च करेगा ना. And it will be most likely the world's most expensive Earth imaging satellite. हो सकता है दुनिया के सबसे most costliest में से हो, ठीक है. और ये फ्यूचर प्लान है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल. दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम सैटेलाइट्स, दीस थिंग्स, ठीक है. नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड इट एंड देन आंसर मी. ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. आप सोच रहे हो कि सर सबको इंपॉर्टेंट, लेकिन बट दीस आर इंपॉर्टेंट. व्हाट कैन आई से, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स. जब इन न्यूज में आया तो काफी हंगामा हो गया था, इसीलिए आपको पता होना चाहिए. मतलब पीपल गॉट पैनिक कि ये क्या हो गया. So basically, which COVID vaccine is being talked about? Please the right answer. Which COVID vaccine is being talked about? And who is the manufacturer of that COVID vaccine? दोनों बताइए. Yes, Delsin, Donat, Muskan, Dhriti, Dharini, Rashi, Lavina, Safi, all the right. Thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS syndrome इसको कहते हैं. ये एक तरह से कोविशील्ड के लेने के बाद ऐसा कह कि कुछ केसेस में डेवलप हुआ. नहीं, भारत बायोटेक ने नहीं बनाया. कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका प्लस भारत बायोटेक. नो, आई हैव नॉट गॉट 100% परफेक्ट आंसर. कुछ लोगों ने एस्ट्राजेनेका बताया, बट पार्शियली इट्स करेक्ट. कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट, दैट इज आल्सो पार्शियली करेक्ट. यस, दलसिंह डोनाट हैज आंसर्ड मी परफेक्टली, ठीक है. तो इसमें है क्या, पहले मैं बताता हूं. ये कोविशील्ड है और इट हैज बीन डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. मैं बता दे रहा हूं, आई नो कि आप क्या सोच रहे होगे. प्लस एस्ट्राजेनेका. एस्ट्राजेनेका जो है ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है, द यूके बेस्ड. ओके, नाउ अब आप सोचोगे सर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का भी नाम आ रहा था. सो यस, इट इज ट्रू. इन इंडिया दे हैव गॉट द लाइसेंस. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जो सीईओ है ना आधार पूनावाला. अभी आपको पता है, यू नो, आधार पूनावाला हैज बॉट अ वेरी फेमस कंपनी, 50% शेयर in a very famous film production house. What is that called? हो सकता है ये भी पूछ ले एग्जाम में, because this is very much in the news. That is why I'm asking. Yes, करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन. Yes. So जो तो कोविशील्ड ओरिजिनली जो है वो इंडियन मेडिसिन, इंडियन वैक्सीन नहीं है. So be careful, it is not an indigenous vaccine. This vaccine is developed by Oxford University and AstraZeneca. So ये ब्रिटिश वैक्सीन है. इंडिया में परमिशन दिया गया. I mean, Serum Institute of India Pune got the license to make it. So it means it is not an indigenous made in India vaccine. Be careful, ठीक है. जो इंडिजिनस मेड इन इंडिया वैक्सीन है उसका नाम है कोवैक्सीन. और ये क्लैट में क्वेश्चन आया था. ये कोवैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय whom? So the answer is Bharat Biotech India Limited plus ICMR, Indian Council of Medical Research. This is a question asked in CLAT. ठीक है, ओके, सो यू शुड नो दिस. हाँ, दूसरी चीज मैं ये बता रहा था,
Yes, there was a meme also. Yes, Preeti. I was talking about Adar Poonawala. So recently, actually, Adar Poonawala, the CEO है Serum Institute of India Pune के, Adar Poonawala, he has bought 50% share in Dharma Production. ये अभी 2-3 दिन पहले न्यूज में था. Dharma Production is the film production house of Mr. Karan Johar. Karan Johar का नाम सुना होगा, very famous filmmaker. इनका प्रोडक्शन हाउस था, तो 50% इन्होंने इनको बेच दिया. ओके, धर्म प्रोडक्शन इज अ वेरी फेमस फिल्म मेकिंग प्रोडक्शन हाउस. आई होप आपने नाम सुना होगा इफ यू हैव लिटिल बिट आइडिया ऑफ सिनेमा. ओके, तो खैर अब हम आते हैं टीटीएस पर. ये था क्या? रेयर कंडीशन था. इसमें क्या कुछ मतलब जैसे इट इज अ रेयर कंडीशन इन विच ब्लड क्लॉट्स फॉर्म इन अनयूजुअल प्लेसेस एंड द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स गेट्स ड्रॉप एटसेट्रा. कुछ लोग कह रहे थे शायद इससे बहुत सारा हार्ट अटैक्स वगैरह समथिंग आ जाता है. नॉट सो दीस थिंग्स वेर इन द न्यूज. फिर बहुत सारा थ्योरी वोरी निकलने लगा. वी आर नॉट गोइंग इन दैट थ्योरी, बट यस, एक्चुअली हुआ ये था कि थिंग्स देयर वर सम कोर्ट केसेस हैपनिंग इन इंग्लैंड. मैं इतना डिटेल नहीं जा रहा हूं. एंड समवन फाइल्ड अ कोर्ट पिटीशन इन द इंग्लैंड कोर्ट. उसमें फाइनली जो है कोविशील्ड ने एक्सेप्ट किया कि यस, इन सम केसेस इट माइट हैपन 1 in 1 lakh और समथिंग लाइक दैट. मतलब बहुत कम चांसेस ये उन्होंने एक्सेप्ट किया था. यस, हाँ, जेमी स्कॉट, गुड दल सिंह दोरट, हाँ, जेमी स्कॉट केस है. तो इसीलिए ये न्यूज में था. तो हो सकता है ये पूछ लें टीटीएस. then few others also filed. In fact, शायद इंडिया में कुछ केसेस वगैरह फाइल हुआ था. Now let's move on to the next question. X suspended the BBC and Voice of America, दोनों न्यूज ब्रॉडकास्टिंग चैनल. बीबीसी का नाम सुना होगा, वॉइस ऑफ अमेरिका इंडिया में उतना ज्यादा फेमस नहीं है, बट यस, because there was a report by Human Rights Watch on a mass killing of civilians carried out in the country's armed forces. So हाँ, यस, coup वगैरह बहुत कुछ हुआ था यहाँ पे. यस, सी इज राइट आंसर. धारिणी, मुक्ति शर्मा, लवीना, राशि, दिल सिंह, धृति, मधावी, यू आर राइट. सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. बुर्किना फासो सस्पेंड्स बीबीसी एंड वॉइस ऑफ अमेरिका. यहाँ पे और ऐसे भी अफ्रीकन कंट्रीज से बहुत सारे इश्यूज हैं एक्चुअली. हियर इज इंडिया, दिस इज अफ्रीका. अफ्रीकन कंट्रीज आर एक्चुअली देयर हैव बीन लॉट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस. मिलिट्री को अक्सर होता रहता है यहाँ. आई हैव हर्ड कभी-कभी एक साल में 3-3, 4-4 बार हो जाता है. एक बार हुआ, फिर दूसरी बार उसको हुआ, फिर तीसरी बार हुआ. सो समथिंग लाइक दैट. तो दैट इज एन इशू इन बुर्किना फासो एंड ऑल. ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा, मिलिट्री को इन बुर्किना फासो एंड ऑल. Yes, good evening, Madhavi. Welcome to the class. Let's move on. 4th June को रिजल्ट आया था लोकसभा इलेक्शंस का. I hope you all are aware. So there is a question for you after Lok Sabha election of 2024. Which of the following Lok Sabha was formed? नहीं, जब अभी 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद कौन सा लोकसभा स्थापित हुआ, मतलब बना? Yes, धारिणी, दिल सिंह, मुक्ति, राशि, सैफी, लवीना, राशि, बंसरी, मुस्कान, लवीन. बहुत सारे लोग आंसर किया. I cannot take everyone's name. D is the right answer. 18th लोकसभा बना था, so you should know it. And elections हुआ था 19th अप्रैल से 1st जून तक. ये सब तो पता ही होगा. 543 मेंबर्स पर इलेक्शन हुआ. ठीक है. Who among the following is the longest serving prime minister of India? क्योंकि अब क्या होता है कि लोकसभा से रिलेटेड, चूंकि लोकसभा इलेक्शन हुआ है, so there is a chances that they'll ask some questions around लोकसभा इलेक्शंस. कि सबसे लंबा प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, कौन सा वाला लोकसभा है, कितने फीमेल्स हैं, कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा फीमेल आए, कितने लोकसभा एमपीज पर क्रिमिनल चार्जेस हैं. दीस थिंग्स दे डू आस्क समटाइम्स. ना चांसेस ये होता है, जैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था, तो उस साल पता है क्या किया था उन्होंने? प्रेसिडेंट इलेक्शन पर क्वेश्चन आया था कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए वो पहले कहाँ की गवर्नर थी. प्रेसिडेंट इलेक्शन इज डन थ्रू पीआरएसटीवी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. तो जो चीज का इलेक्शन होता है वही जून जुलाई में इलेक्शन हुआ था, वो दिसंबर में पूछा था. Similarly, भी लोकसभा इलेक्शन हुआ है, तो चांसेस है कि पूछेंगे. लॉन्गेस्ट सर्विंग इज जवाहरलाल नेहरू. सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. फिलहाल तो यही 16 years 286 days. प्राइम मिनिस्टर मोदी 10 years 70 days, तो सबसे ज्यादा इनका. Okay, the next is the current India government has the support of 2 major political parties. Which are the following pairs is right? और दोनों ये भी बता दीजिए कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं. And everyone please press the like button and subscribe to the channel also.
स्टेट्स प्लीज टेल मी, सिर्फ आंसर नहीं, और उनके लीडर्स का नाम बता दोगे सो आई विल बी वेरी 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 हैप्पी। बिहार, आंध्र प्रदेश, जेडीयू नीतीश कुमार, यस वेरी गुड। एंड आंध्र प्रदेश से कौन है? चंद्रबाबू नायडू, यस दल सिंह डोनट, गुड। और बहुत सारे लोगों ने आंसर किया टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, फुल फॉर्म लिख देता हूं, तेलुगु देशम पार्टी, इट इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। एंड चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, एन चंद्रबाबू नायडू, Naidu is the chief minister and the support of one supporter. The second who supports the NDA government is JDU, Bihar, Nitish Kumar. Bihar CM Nitish Kumar, okay, his party is supporting. हाँ जी, so B is the right answer to this question, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, great। अच्छा एक चीज बता दे रहे, 543 मेंबर्स पर वोटिंग होता है और इसके +2 एंग्लो इंडियंस भी होता था, आपको याद है ऐसा कुछ? स्कूल डेज में पढ़ाया गया होगा, आई एम श्योर। देयर आर टोटल 545 सीट्स इन लोक सभा, 543 गेट सिलेक्टेड, 2 एंग्लो इंडियंस। कुछ अब नहीं होता ये, आफ्टर जनवरी 2019 दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर, ठीक है। मैं इसलिए बता दे रहा हूं बिकॉज स्कूल में पढ़ाया गया तो हो सकता है आपने अपडेट नहीं किया हो, बट यू शुड नो दैट नाउ दिस इज ओवर नाउ। हाँ वेरी गुड, वीर शर्मा, ओके है ना। तो ये सब तो पढ़ लीजिएगा। हाईएस्ट एवर पार्टिसिपेशन बाय वोटर्स देखा गया, 968 मिलियन पॉपुलेशन ने वोट किया। 968 मिलियन पॉपुलेशन का मतलब हुआ 96.8 करोड़ लोगों ने वोट किया आउट ऑफ 140 करोड़, समझ गए? इतने सारे लोगों ने वोट किया, ठीक है। खैर है ना, तो ये सब पता होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, कुछ एक दो और क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। नाउ मोस्ट लाइकली कल तो टुमारो इज दिवाली, सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, एंड मोस्ट लाइकली टुमारो देयर विल नॉट बी एनी क्लास। तो हम लोग सैटरडे को 3 PM पे मैंने आपको बताया ना क्लास होगी ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था, एंड यस देयर कैन बी क्वेश्चन इन डिफरेंट एग्जाम्स फ्रॉम देयर। और संडे को 3 PM पे आई विल बी हैविंग सेशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एआई पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज ये सब आजकल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ओके यस, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? मिस्टर जीवी मावलांकर, यस बी इज द राइट आंसर। अच्छा एक चीज होता है मावलांकर रूल, जानते हो कोई? किसी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा सा हायर एंड पे, बट मैं क्योंकि आ गया तो मैं बता दूं। क्लास ऑन बीएनएस बीएनएनएसएस, दिल सिंह डोनट, वो जो है लीगल फैकल्टी की क्लास हो गई, ठीक है। तो आप लीगल फैकल्टी से यूट्यूब पे रिक्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर एक्चुअली मेरे पास क्लासेस, हाँ उसमें लिमिटेड टाइम में लेना है ना, ठीक है। 10% फॉर अपोजिशन लीडर, वेरी गुड धारिणी, फैंटास्टिक। मावलांकर रूल इज दिस, ये किसी एग्जाम में आया था, बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम में, और अब मैंने आपको बताया कई बार जो गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो पूछ लेते हैं। तो वो होता क्या है? अच्छा आपको ये पता है कि लास्ट टाइम जब एनडीए की सरकार थी, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट 2019 से 24 तक, देयर वाज नो अपोजिशन लीडर, ऑफिशियल अपोजिशन लीडर नहीं थे। हालांकि लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे ये वो इसी वजह से मावलांकर रूल। मतलब ये होता है कि आपको जैसे 543 सीट्स है, इसका 10% कितना होगा? 54.3, यानी 54 पॉइंट में तो इंसान होता नहीं है, तो 55 सीट्स लाना जरूरी है, तभी आपके लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ठीक है। एंड लास्ट टाइम 55 से कम कांग्रेस की सीट थे, तो लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं था। इस बार कांग्रेस की सीट ज्यादा है, मोर देन 55 है, दैट इज व्हाई वी हैव लीडर ऑफ अपोजिशन। ऑफिशियल कांसेप्ट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इज देयर, एंड दैट इज मिस्टर राहुल गांधी इन द स्टेट द लोकसभा, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज किया आता है, और आई होप यू आर अवेयर, मैंने आपको बताया भी था एक क्लास में कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की इक्विवेलेंट होता है। तो मैं संडे को 8 PM पे क्लास लेता हूँ, वहां बताया भी था कि ऑर्डर्स में। सो डेमोक्रेसी का आइडिया ये होता है कि इवन लीडर ऑफ अपोजिशन को भी यूनियन कैबिनेट की इक्विवेलेंट रिस्पेक्ट दिया जाता है। सो दैट इज व्हाई, बिकॉज द डेमोक्रेसी बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ स्ट्रेंथनिंग द अपोजिशन, आल्सो मींस लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ अपोजिशन, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मावलांकर रूल यही 10% रूल होता है कि in order to recognize a leader of opposition you need to have at least
10% of the total Lok Sabha members. ठीक है? Yes. In which year the first Lok Sabha election happened after independence? Yes. Good evening, Aditya. Welcome to the class. फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था? ये सब आसान क्वेश्चन है, बट लोकसभा चूंकि इलेक्शन हुआ था, so there is a highly likelihood they will be giving questions from this. Yes, the right answer is C. Actually हुआ ये था कि 1951 के अक्टूबर नवंबर से शुरू हो गया था और खत्म हुआ था 1952 के फरवरी में. ठीक है, लेकिन if you read it actually the NCERT book clearly says, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी बुक आई थिंक 11th या 12th में आप पढ़ोगे, इसमें मेंशन है. सो दे से कि इसको हम लोग 1952 इलेक्शंस ही मानते हैं. वी कंसीडर इट एज 1952 इलेक्शंस बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इलेक्शन वोटिंग हैपेंड इन 52. ठीक है, सो इसीलिए वो 1952 इलेक्शंस माना जाता है. ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं, बट जनरली आई हैव सीन 1952 इलेक्शंस. फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस हैपेंड देयर. ठीक है, ये फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था. अजय घोष फ्रॉम सीपीआई वाज द मेन अपोजिशन एंड जवाहरलाल नेहरू. तो इनको तो कोई नहीं जानता है, बट जस्ट हैव एन आइडिया. Okay. Now this is the next question. In order to make government, how much minimum seat is required in Lok Sabha? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. सर रोज होती है क्लास. हर क्लास है मंडे टू थर्सडे 6 PM पे हो रही है रिवीजन क्लास. ठीक है, ठीक है. ओके, दिस इज हैपनिंग. एंड प्लेलिस्ट में जाना. वी हैव डन ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट्स आल्सो. प्रीवियस 6 पार्ट्स वी हैव डन. दिस इज द 7th पार्ट. कल नहीं होगा. टुमारो इज आल्सो थर्सडे 6 PM, बट टुमारो इज दिवाली, सो विल नॉट बी हैविंग सेशन. एंजॉय योर फेस्टिवल. एंड बट जनरली मंडे टू थर्सडे 6 PM पर ही होता है. ठीक है. Yes, so 543 divided by 2 करते हैं तो 271.5 आता है. तो पॉइंट में तो इंसान होते नहीं है, 272 होगा. ठीक है, हमेशा ना जब भी पॉइंट में आए तो थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है. ठीक है, so 272 is the right answer. So you need at least 272 seats. B is the right answer to this question. और एनडीए को 293 सीट्स आई. हालांकि इंडिविजुअली बीजेपी को अकेले 240 आई, मतलब 272 नहीं क्रॉस कर पाई, बट with the help of TDP and JDO it has actually crossed the 272 mark which is required. तो मैं next class से I will begin from here. ठीक है, so but I am giving one homework also. ठीक है, and this is the homework. After the class is over, you will be provided a recorded video, and after, in the comment section you can answer this. ठीक है. दूसरी चीज ये बता रहा हूँ कि सैटरडे को आई हैव टोल्ड यू आई विल बी हैविंग अ क्लास एट 3 PM और क्लास होगी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स. क्योंकि बच्चे लोग बोलते हैं सर गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आता है. एंड संडे को 3 PM पे विल बी हैविंग अ सेशन ऑन दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्लास ओवर होने के बाद नीचे आंसर कीजिएगा. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे.